जी हाँ, कैसे हैं दोस्तों? वेलकम बैक। इट्स मंडे, बट आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस हैव द मंडे ब्लूज। एम आई राइट? एम आई रॉन्ग? आई थिंक आई एम राइट। वेल, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ जेमी ऑल्टर। आप देख रहे हैं एक बार फिर से एक लाइव स्ट्रीम ऑन माय क्रिकेट चैनल ब्रॉट टू यू बाय डैफा न्यूज। डबल हेडर दिन था दोस्तों। कल पहला मैच मुझे काफी, क्या कहूँ, काफी डल लगा। हैट्स ऑफ टू गुजरात फॉर विनिंग, बट ज्यादा कुछ मनोरंजन नहीं मिला उस मैच से जितना भी मैंने देखा। लेकिन जो शाम का मैच था दोस्तों, चलिए आज के शो पे थोड़ा बात करें शाम के मैच को लेकर, यानी कि विशाखापट्टनम में द होम टीम, द होम अवे फ्रॉम होम, दिल्ली कैपिटल्स बीटिंग चेन्नई सुपर किंग्स बाय 20 रन। सच बताइए आप लोग जो मेरे साथ इस स्ट्रीम पे जुड़ा है, कौन कौन, कोई है जो मैच से पहले ठीक है, मैच के बीच नहीं, मैच के बाद नहीं, मैच के बाद ऐसा कोई है जिसको लग रहा था कि दिल्ली की टीम, जो कि काफी वीक लगी मुझे इससे पहले, वो चेन्नई जैसे डिफेंडिंग चैंपियंस, चेन्नई जैसे टॉप टीम को कल विशाखापट्टनम में हरा देगी? सच कहिए, सच कहिए। और यदि आप उनमें से हैं जिनको लगा हाँ बिल्कुल ये टीम धोनी की टीम को हरा सकती है, तो बताइए मुझे, क्या कारण थे आपके पास? क्या क्या राज कोई था आपके पास जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ ये दिल्ली की टीम इस टीम को हरा देगी? मेरे पास तो नहीं था। दिल्ली looked poor in their last two matches. Obvious problems with the batting, obvious problems with the bowling especially. But कल, and I want to stress on this, मेरे हिसाब से जो एक complete shutdown या take down of CSK batsmen जो कल दिल्ली वालों ने किया था, मेरे लिए ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कल के मैच से। More than Prithvi Shaw coming back and getting a good return innings, more than Rishabh Pant's 50, which I thought was such, कि I have a soft spot for Rishabh Pant. तो more than all that, it was the way कि चेन्नई के बड़े बड़े बैट्समैन को, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ से शुरू डाउन टू समवन लाइक शिवम दुबे, वही शिवम दुबे दोस्तों जो कल के मैच से पहले इस आईपीएल के सबसे सफल इंडियन स्ट्राइकर थे, यानी कि द स्ट्राइकिंग एबिलिटी इन द मिडिल ऑर्डर दैट शिवम दुबे हैड, कल वो इनिंग्स, वो पारी, वो काबिलियत लापता थी। लापता क्योंकि ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिल्ली के बॉलर्स ने करी। सो व्हेन यू शट डाउन समवन लाइक अ रचिन रविंद्रा, जो कल के मैच से पहले क्या 200 की स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा था, आपने उनको एक स्ट्रोकलेस वंडर बना दिया। खलील अहमद ने गेंद डाला डाला डाला, 12 रन पे केवल 2 रन बना पाया रचिन रविंद्रा। गायकवाड निकिंग ऑफ, इवन समवन लाइक डेरल मिचेल जो इतनी शानदार हिटर ऑफ द बॉल है, वो भी नहीं चल पाए। जडेजा को रोक दिया। सिर्फ और सिर्फ एक हद तक रहाणे को थोड़ी फ्रीडम मिली शॉट्स खेलने के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स दैट फैंटास्टिक विंटेज रोल बैक टू इयर्स इनिंग्स फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। आप श्योर आप में से बहुत बहुत व्यूअर्स का दिल खुश हुआ, मन भर गया होगा जब धोनी ने वो पारी खेली। लेकिन नॉस्टैल्जिया को एक तरफ रखे, अगर एमएस धोनी क्रीज पे आए हैं, अगर एमएस धोनी 17-18 गेंदे खेलेंगे इस पूरे सीजन में सीएसके के लिए, तो भैया मुझसे लिख के ले लो कि सीएसके की हालत बहुत बहुत खराब होगी। अगर धोनी की बैटिंग की जरूरत पड़ी आपको, इसका साफ मतलब है कि आपकी टीम का खराब दिन रहा, क्योंकि धोनी खुद नहीं चाहते कि वो आकर 16-17 गेंदे खेले। Guy is going to be 43. He's a legend of the game. He's the most successful captain in the IPL, along with Rohit Sharma. He does not want to be batting 16-17 balls. That's why धोनी हर सीजन उनकी बैटिंग नीचे नीचे आती रहती है। वो बहुत खुश हैं कि उनकी बैटिंग ना आए। जनता ऑफ कोर्स चाहेगी, नॉट जस्ट सीएसके फैंस, पूरे इंडियन क्रिकेट की जनता मैं समझता चाहिए कि धोनी की बैटिंग आए, हमें फिर से ऐसी बैटिंग देखने को मिले। क्या छक्के मारे कल धोनी ने, बट द पॉइंट इज, अगर धोनी क्रीज में आए तो नौबत जो है, it's not good for Chennai team. That aside, I just cannot believe that this is the same Delhi team जिसको देखकर मैंने कहा कि भाई इनकी बॉलिंग सबसे वीक है, ये शायद 9 या 10 में से रहेगी इस आईपीएल सीजन में। हो सके ये 9 और 10 रहेगी, पर अगर कोई दिल्ली कैपिटल्स का फैन है यहाँ पे, तो आई थिंक यू हैव a lot to be happy of. Khalil Ahmed, even Akshar Patel, containing runs, but it was the way that Khalil Ahmed और फिर मुकेश कुमार ने आकर इतने बड़े बड़े बैट्समैन की शॉट्स रोक दिया, इनको बिल्कुल स्ट्राइकिंग की फ्रीडम नहीं दिया। मैसिव मैसिव विन। आई डोंट नो यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स का सीजन कैसे रहेगा, लेकिन यदि वो टीम अचानक 4-5 मैच जीतने लगे, यदि वो टीम प्लेऑफ्स रेस में शामिल हो जाए, आई डोंट थिंक सो, तो मेरे ख्याल से कल का जो मैच था मार्च 31 विशाखापट्टनम में, इट कुड बी
a massive turning point for Delhi Capitals. I'm not even going to suggest for a moment that CSK have massive weaknesses. भाई ये CSK इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. ये सारे predictions को पकड़ के निचोड़ के कूड़े के डब्बे में डाल देंगे. ये धोनी की टीम है. मेरे हिसाब से the defending champions CSK are going to win this tournament again. I have them storming into the final four, into the क्या बोलते हैं वो playoffs. Um, just too good a team. So hats off to Delhi. And I want to know from you कि आप लोग को कल खासकर दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की पारी, चाहे शॉ हो या ऋषभ पंत हो, और फिर उनकी बॉलिंग को लेकर आप लोग की राय क्या है. तो चलिए आपके कमेंट्स पे आते हैं. पहले मैं थोड़ा एक सिप कॉफी पीता हूं. श्रेयांश कह रहे हैं कल तो ये लग रहा था धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा और बोलेगा आई स्टिल गॉट इट, पूरा दुनिया हिल जाता. नहीं नहीं, धोनी को ऐसी कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्टेटमेंट्स देने का. ही इज धोनी. He doesn't do the talking. He lets the bat do the talking. Fantastic. Like I said, a vintage throwback to what Dhoni used to do so regularly. शिखर भी गिल से ज्यादा रन बना रहे हैं तो रोहित शिखर भी के धोनी डीके को WTC में ले चलो. बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. बहुत खूब बहुत खूब. अप्रैल फूल मनाया. मैं पढ़ गया भाई, भावनाओं को पढ़ के मैं सीधा अप्रैल फूल तक आ गया. श्रेयांश कुमार कनिष्ठ सुनदेव भाई, क्या धोनी भी T20 में बैटर बनकर जा रहे हैं? बिल्कुल. अगेन अप्रैल फूल्स कमेंट है ये भी. From here on, I won't rule out DC MI from the qualification run. Fair enough, fair enough. I will. My gut says कि दोनों टीम्स नहीं जाएंगे. निमेश, IPL 2024 में हर टीम का होम डोमिनेंस है, फिर आती है RCB. काहे अप्रैल फूल्स के दिन पर सबसे बढ़िया अप्रैल फूल्स टीम को लेकर आ रहे हैं दोस्त, RCB. कुमार कनिष्ठ might be an unfavorable opinion, but I feel Rishabh should not be taken to the World Cup. बिल्कुल. He's been a disaster in the white ball teams, which is tournament crunch situations. Bilkul, we've done dedicated shows how his T20 batting does not inspire much confidence when it comes to India level. But again, like I said, all throughout the IPL, जब भी पंत आएंगे भाई 15 महीने के बाद आ रहे हैं. It's a miracle he's even playing cricket. It's a miracle he's walking. I'm not going to be critical of him. In his third match back, he got a 50. So let's spare some room for Rishabh Pant. But I get it. He should not be rushed back into the World Cup. Ravi Shankar, Mumbai Indians wanted to trade Rohit to Delhi Capital. They wanted one big pivot to complete the trade, but that deal couldn't happen. Your thoughts? I don't know whether this happened. I do have on good record that he asked around at two franchises. It's not the Delhi Capitals, and apparently he was told, "नहीं, आपकी जरूरत नहीं है." So I haven't heard about this. The Mumbai Indians wanted to trade Rohit Sharma. But why are we talking about Rohit Sharma? Let's talk about yesterday's match. In today's match, crowd will be on fire. Can't wait to watch. बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं आज क्या होगा. Yes, Jamie, I had a feeling that DC would win as a law of average, as DC were desperate to win to win the race today. I think that MI will also register their first win. Okay, fair enough. Siraj से ज्यादा convincing तो Mohit Sharma and many other लग रहे हैं. बिल्कुल, I have genuine concerns about Siraj, which I've shared before. Mukesh Kumar, a better death lord than Harshal Patel. Harshal Patel is out of the discussions. As far as the Indian team goes, Arshdeep has been good, but he's off the boil these days. Mukesh Kumar, no, I still don't see how Mukesh Kumar plays T20 matches. I don't, despite yesterday's performance. I have doubts over his capabilities. Maafi chahunga. Hello, Vikram, how are you? CSK needs to look for a legit finish in the next auction for 2025 and beyond after Dhoni finishes. Yes. Please don't show the teacup by Siemens. Well, it's my show, it's my cup. I will show it. Kumar Vigani, Jamie, that coffee cup is traumatizing to an extent. It is. That's why I always use it at home to remind me how India are 11 years without a trophy. Dukh to hota hai, aap sab jante hain. I've done a couple dozen shows on the pain of November 19th. It's just to keep us grounded. हमारी टीम बेहतरीन है, नंबर 1 है 3 फॉर्मेट्स में, पर इनसे ट्रॉफी घंटा नहीं मिलता. So I keep this as a very sobering reminder of why we shouldn't go overboard with our praise of Indian teams. And I'll say it again. Zero hopes from the T20 World Cup अगर आप ऐसे players को लेके जाओगे. Anyways, let's move on. Dhoni, Khalid, Avesh Khan are in T20 World Cup. April Fool, बिल्कुल. कल धूप के कारण आधा स्टेडियम अहमदाबाद में खाली था. सही बात है. What a massive stadium, but what a badly built stadium. No, वहाँ पे धूप है ही नहीं. Amazing how these people think now when they build these stadiums. Pandya redemption are coming. I don't think so, but मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Divine Soul, how are you?
जय भाई आरसीबी को आप जैसा बॉलर की नीड है, वी वांट यू इन स्क्वाड। और ये अप्रैल फूल नहीं, ये 4 ओवर 20 रन 3 विकेट्स। हाँ कल एक और ट्रॉफी मिला मुझे, बट कहाँ मेरी बात कर रही हो दोस्त। आरसीबी आएगी मेरे पास तो मैं बोलूंगा भाई प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अप्रैल फूल। Is there any chance Mohit Sharma can be selected? I mean, there's every single chance, but again, with age on his side, I don't see it happening. Hope still alive? Or Prithvi Shaw playing for India? Siddhant, very good question. Definitely, hope springs eternal, but I would say Prithvi Shaw is 3 years away from an India call. Shreyans Srivastav, it was a win of perfect execution of a bowling plan and sticking to it. Bilkul sahi. Very, very rare that in the IPL, a team that is playing against Dhoni and CSK will read the conditions better and uh, and apply the conditions that was better. This was, like I said, it was amazing, surprising to me कि दिल्ली के बॉलर्स ने ऐसा टेक डाउन किया सीएसके के बैट्समैन। भाई साहब क्या बैटिंग लाइनअप है वो। आपने उनको रोका इस हद तक कि सिर्फ रहाणे सबसे फ्लुएंट लगे और फिर धोनी जो कि 43 होने वाले हैं 2-3 महीने में, उन्होंने आपकी हालत टाइट की। बाकी सारे बैट्समैन, युवा बैट्समैन, बड़े बड़े हिटर्स, रविंद्रा, डेरल मिचेल और खासकर शिवम दुबे को आपने उनको चुप करा दिया। ये बहुत बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है दिल्ली की बॉलर से। Mayank Yadav can be future star with that patient actually. I hope they groom them. बिल्कुल न जाने कहां से आया बंदा 100 क्या 155 और I didn't see him bowl that day. I was away that day, but I read about him. I saw some clips. The guy looks very very good. Lal Babu Prasad Man saying, I am not such guy. You are not such guy. What kind of guy are you not? गोदी मीडिया के तरह। अरे क्या बोल रहे हो सुबह सुबह यार, शुभ शुभ बोलो यार, कहाँ जा रहे हो गोदी मीडिया। एनीवेज, ब्लैंक ब्लैंक की तरह हमारे कमेंटेटर भी गोदी हैं, उन्हें वो लूजिंग नहीं दिखते हैं वर्ल्ड कप में जिसमें हम हार सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं समझ गया दोस्त निमेश, समझ गया भावनाओं को, लेकिन ऐसे टॉपिक को नहीं हम छूते हैं यार सुबह सुबह। Pat Cummins said, I love playing in the Narendra Modi Stadium. Last time I played, it was jam packed. अबे ये दर्द दुख काहे कम नहीं होता बे। November 19th. Let's remember that day with sadness, with pain, but how it should be a benchmark of how not to play cricket after you won 11 matches in a row. Do you think Khalil Ahmed should play the T20 World Cup? I was on a live stream yesterday after the match and I said, मुझे ताजुब की बात है कि जब मैंने स्कोर कार्ड खोल के खलील अहमद का प्रोफाइल देखा कि वो सिर्फ 26 साल के, यानी कि वो 20 साल के थे, 21 साल के थे तकरीबन जब उन्होंने पहली बार इंडिया के लिए खेला। एंड that's an interesting fact. I thought he'd be a little older because it's been 5.5 years since Khalil Ahmed first played for India in 2018. He played about 10-12 one days, about the same amount of T20s. यानी कि बंदे के पास 20 मैच का अनुभव है in an Indian jersey. Whatever reason that he went off the boil, he's come back now with a couple good seasons. If Khalil Ahmed bowls the way he has this IPL, especially given the need of a death bowler and the left arm pacer in India's white ball squads, I think he will definitely. I don't think he'll make it to the T20 World Cup squad because that May 1st deadline is too soon, Ravi Shankar. But if the guy keeps winning matches, keeps putting in crunch bowling performances, he will definitely be in discussions for the T20 World Cup. But as good as Khalil has been, I just don't think he has enough time on his side to suddenly, from left field, break into India's T20 World Cup squad. You did not make any video on Mayank Yadav. Yes, as I said, I was away for 2 days. I didn't watch him. So जिस बंदे को देखा नहीं, उस पे video कैसे बनाए भाई? Jadeja's failed yesterday with the bat show the reminder. Bilkul, I was on a live stream yesterday and I was asked this question. Do you think Jadeja should go to the T20 World Cup? And I said, I've been saying this for the last 1 year. I have no space for Jadeja with his diminishing T20 batting returns in my T20 World Cup squad. And he's 36. 4-5 साल पहले इंडियन टीम से better, 4-5 साल से पहले वाले CSK MI को भेज दो T20 World Cup, better chance है. सही बात है. Shaurya Pathak, it's a traditional Vizag wicket, red soil wicket with bounce and seam, swing with humidity and moisture. In a lively wicket, Khalil, Mukesh, Ishant, Nokia can be handled. Definitely. But I thought CSK would fare much better despite all that. क्या सिर्फ आरसीबी अपने होम में हारेगी, बाकी सब मैच जैसे इसका मजाक उड़ाते हैं? I mean, नहीं ऐसा नहीं है, और भी टीम्स हारेंगे मेरे ख्याल से, चेन्नई को छोड़ के और आरआर को छोड़ के, बट look, आरसीबी
कहीं जा रहे हैं मार्च वीक के पीछे यार. They don't have the bowling. Let's also remember April 2nd. Let's do that. Yes. Sir, good morning. Love you, Akshat. Dhoni seems to be middling better than our designated middle order for the T20 World Cup. I mean, it's just one innings where he had nothing to lose. Dhoni के आने से match बदलने वाला नहीं था. He was never going to win the match. The match was finished. He just had some fun, like an open net session. But what fun to watch him. Josh Butler smashing Mumbai Indians. Pranav, I would love that. I would love it to see him. I would love to see him do it because I often make him my fantasy captain. But इस form में I don't see Josh Butler doing it. But if it happens, I will remember you, Pranav Shukla. Can Avesh and Khalil make? I've discussed Avesh in the last video. I mentioned the same thing. If he keeps bowling the way he is, because Avesh Khan is much closer to World Cup selection because he was part of India's most recent T20 squad. Khalil has not been around for 4 or 5 years. So between the two, Avesh Khan is definitely a much bigger shot of going to the T20 World Cup. As soon second wicket fell, I knew we'd witness Dhoni Shotre. Interesting. Good. Imagine someone is having birthday on 19 November and she is cricket fan, their whole life is ruined. They can't celebrate birthday ever again. दुख की बात है ना? Do you think as the tournament goes ahead, Moeen Ali will be a better choice in playing 11 ahead of Daryl Mitchell? Good option, Siddhant. Good option. But again, Moeen Ali, if he's playing in CSK's lineup, I only see him batting at number 3. He's not good enough to bat somewhere else. He has to be given the license to be a pinch hitter. But when you have Rahane at 3, I just don't see Moeen Ali playing too many matches. My gut feeling. SRH बैटिंग ऑर्डर के बारे में क्या लगता है? इनका मैच नहीं है आज और कल भी नहीं था. बहुत शोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज कोई जरूरत नहीं उनके बारे में बैटिंग, उनके बारे में बात करने की. जब उनका मैच होगा फिर हम करेंगे. I'll persist with Dhoni, Khalil, and Avesh Khan. At the T20 World Cup, okay, I will select Krunal Pandya instead of Krunal Pandya has to start doing something first. What is Krunal Pandya doing? पंड्या मुंबई को जीटी की तरह कैप्टन कर रहा है. जीटी में ज्यादा स्टार्स नहीं थे जैसे कि मुंबई में है. पांड्या को बैटिंग पर पांड्या को अमित भाई पांड्या को बहुत चीजों पर अभी ध्यान देना पड़ेगा. You saw those reels of the security cordon that had to escort him into his SUV and the bus. Very bad times have fallen on Hardik Pandya. But chodo, let's not kick a man when he's down. जय भाई परसों तक सब शॉ को अनफिट बोल रहे थे और कल उसने आकर 48 बना दिए, 43 बनाए शायद. गड़बड़ कहाँ हो रहे हैं मैनेजमेंट की साइड से या शॉ की एडवाइस जो हम काफी टाइम से देखते हैं. वेल मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, पृथ्वी शॉ खुद ही जिम्मेदार हैं कि वो अब तक इंडिया में अपनी जगह कायम नहीं कर पाए. ऑफ कोर्स उनको 2-3 चोट लगे हैं, but he has an attitude problem. He's not. Look, I'm sorry at the risk of being accused of body shaming someone. कल का पृथ्वी शॉ जो देखा मैंने, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट नहीं है. क्या 23, 24, 25 साल के हैं शॉ, जो भी है, वो फिट नहीं है. आईपीएल के लेवल पर एक कभी कभार 30-40 मार सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत अच्छे ऑप्शंस है इंडिया के पास. आई लाइक शॉ. बहुत बार कह चुका हूं कि जो 28 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मुंबई से सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे होनहार, सबसे टैलेंटेड जो बैट्समैन आए हैं, Sachin के बाद, more than Rohit, more than Jaiswal, more than anybody else, it's Prithvi Shaw. But he's done so much to set himself back. Good that DC gave him a chance. He looked good for that 43, but you're not going to impress people by scoring 43s. The talent you have, you should be scoring hundreds every 4th, 5th match. Unfortunately, जब तक Shaw ऐसी consistency, domestic में छोटे मोटे असम, मिजोरम टीम्स को छोड़कर टॉप की टीम्स के सामने रन्स मारेंगे, तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट तो वो नहीं खेल पाएंगे. बहुत टैलेंट है इस लड़के के अंदर, पर उस टैलेंट के साथ क्या करना चाहिए, किस राह पे जाना है, अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है मुंबई पत्रकारों से बात करके, वो ये है कि अभी उस लड़के का पूरा फोकस अभी भी इतने हादसे के बाद, इतने बुरे वक्त के बाद अभी भी पूरे तरीके से fit nahi hai. So good to see him come back, good to see him get 43 runs, but far away from Indian team. Khalil said he has test cricket ambition. I would love that. I would love to see a left armer break into India's test team, but I don't know.
I think he's very, very far behind. I think he's a much better bet right now for white ball cricket because Indian cricket needs a left arm option, and the guy is bowling really, really well. श्रेयांश आईपीएल वाले धोनी वर्सेस पंत करते हैं ये सब फैन वॉर्स क्यों? हाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फैन वॉर्स तो कब से है लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है जब से ट्विटर आया है या एक्स ये फैन वॉर्स मैं तो कोई टाइम उसको देता नहीं हूँ ये सारे फालतू आधे तो ये पेड गिग्स होते हैं ये रोहित की टीम पेमेंट करेगी ट्रेंड्स बन जाएंगे विराट की टीम पेमेंट पेमेंट करेगी आई डोंट लुक इनटू फैन वॉर्स व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया बिकॉज़ दे मेनली all sponsored looks like Rohit Sharma and Jaisha should just open the innings. Oh yes, Jaisha has already confirmed this 2 months ago. Has all England players have gone in bad form together? हम इंग्लैंड प्लेयर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भाई दिल्ली कैपिटल्स की जीत के दिन अकॉर्डिंग टू सीक्रेट सोर्सेज बटलर 2 दिनों से बैट को तेल लगा रेडी है वानखेड़े सीरीज में खेलने के लिए अप्रैल फूल्स निमेश पांडे ऑस्ट्रेलिया के फाइनल पहुंचने पर मेंटली प्रिपेयर रहो तो ट्रॉमेटाइज नहीं होगे हाँ सही बात है स्पोर्ट्स फैन saw this India IPL anchoring batting order Dhawan Kohli Sudarshan Hardik Rahul Jadeja your thoughts yep like I said before I would not have a single one of them in my T20 World Cup um, just for the reason that you outlined I've mentioned the drawbacks I'm shocked that people still ask me whether Dhawan should be around no chance Kohli strike it's a problem Sai Sudarshan not a natural T20 player Hardik Pandya going through a bad phase KL Rahul please KL Rahul को दूर रखो 1.5 साल से कह रहा हूँ T20 से and Jadeja yep these kind of players are not going to win you a T20 World Cup पृथ्वी का बैट फ्लॉप बहुत अच्छा है बिल्कुल पृथ्वी शॉ का 11 साल के थे जब मैंने उनको एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में देखा था तब से उन्होंने मुझे प्रभावित किया अपने बैट फ्लो से लेकिन रन्स कहाँ हैं भाई पृथ्वी शॉ के उस फ्लो से गुड मॉर्निंग शुभांकर विश धोनी इन 2019 वर्ल्ड कप नहीं ऐसा नहीं है I'm not gonna say that Dhoni never showed intent just I'm not looking into Dhoni coming and scoring 37 of 16 in an utterly hopeless situation. It's good for the memory, but just because Dhoni scored 37 yesterday in a match which was already finished, I'm not going to go back and say if but to chode. Of course, 2019 World Cup there were some very very obvious flaws in the selection and the approach, but a little bit strange to look at Dhoni's innings yesterday and say, "Yaar, wo kash wo us din aisa khelte." Yesterday was an inconsequential IPL match because the match was done. CSK were smashed. Dhoni probably didn't want to bat the whole match. So, yeah, I'm not going to get into all that yet. It's okay. Divine Soul. In this IPL, I realized that in T20 cricket blazing 20. Oh, yes, bilkul. I just read your comment. Divine Soul. I said this, I think in 2022, when the Indian team was struggling in the Asia Cup. They failed to reach the final. They had a pretty bad T20 World Cup. I said it then. बल्कि in the build up मैंने कहा T20 cricket अब उस मकाम पे पहुंच गया है and a lot of viewers said क्या बोल रहे हो बकवास बोल रहे हो I said 50s and 100s don't matter. I said because India's strike rate was a real problem in the build up to the 22 T20 World Cup and then we had the worst strike rate of all the top teams in the T20 World Cup, specifically in the power play. And I said then, you need 5 players scoring 25 to 35 runs at a strike rate of 180, 190. 5 players or even 4 players. That's going to get you to a match winning total. You don't need 50. अफसोस की बात है, most of our big Indian names, when they get T20 50s, the strike rate is 130 to 145, which is frankly unacceptable nowadays. I know a lot of viewers don't understand. That's fine. You have your opinions. You don't understand the weightage of strike rate. Most viewers, I'm not going to label all of you. Most viewers who come here confuse the volume of runs with the strike rate. I think the 2022 T20 World Cup was an ample, the most glaring example of where India's T20 squad was wrongly selected. और अफसोस की बात है कि 2 महीने बाद हमें लगभग वही T20 squad देखने को मिलेगा. You know, KL Rahul, Rohit Sharma, Virat Kohli, Hardik Pandya. These players are all most likely going to be going there, and it's a problem. You know, you don't need 50s. The longer our big stars back in a match, I actually get worried. Of course, there'll be exceptions like Virat Kohli against Pakistan.
at the MCG. There'll be phenomenal innings. But like you just pointed out, we don't need 50s in T20 cricket. If four players can get 30, 35 runs at a strike rate of 175, 180, 190, just play balls to the wall, attacking shots. It's a risky approach. It's a very risky approach, but I believe it'll give you a better chance. Look what KL Rahul did against LSG. 58 of 44. That's a strike rate of 135. Nahi chalega. KKR's openers got to 85 in under 6 overs. It took Virat Kohli almost 20 overs to get to 80 something. These are problematic stats. I believe we should do. अगर 50 आएंगे तो आने दो, लेकिन उन 50 को 190. The way Sky bats, Suryakumar Yadav is the perfect example of how to bat in T20 cricket. Jaiswal is getting there. We have too many pieces of the puzzle. I'm talking about the Indian team in regards to the upcoming T20 World Cup. I would much rather see youngsters go out and smash 30, 35 at strike rates of 175 plus. Throw some extras, a couple little small 9, 10 cameos. I will stick my neck out and say you're going to get totals of 180, 190, which are going to be very, very good. I hope I'm making sense, but I like the fact that you mentioned this option of getting blazing 30s and 40s as compared from big innings. And big innings, big milestones have unfortunately let our Indian team down. Look no further than the 50 over World Cup last year. पर ये पेड फैन वॉर्स की वजह से कल एक सीएसके फैन का डेथ हो गया। ये हुआ क्या? I didn't notice this. Very, very sad अगर ये हुआ। ये हुआ क्या? Amazing to witness KL Rahul also has fan base and following. Yeah, I mean, if you have a lot of influence and a lot of money, you can get anything. How do average and non-performing players start performing after joining CSK? Oh, बिल्कुल बहुत बात हम कर चुके हैं इस channel पर. Indian players, Josh Hazelwood, Sam Curran, these kind of players all became better T20 players. It's because of MS Dhoni and how he treats you, how he shapes you. Will selectors drop Hardik Pandya if he fails performance IPL? I would like that, but I don't think it'll happen. I mean, English players are also failing IPL decision regardless of team. But why are we talking about English players? They're not important to me or you, I guess. No? Can you see Pant in T20 World Cup? I can, but he won't be picked. But I can see him there, yes, but he won't pick. Kal Kuldeep kyun nahi khela? He had a niggle. Patirana's Yorkers were deadly. Bhai sahab, what a bowler, yaar, Patirana. And he looked quicker also to me yesterday. In Wankhede with humidity today and true wicket, ball will swing in seam. Today, Mafaka, Bumrah, and Kotsi will rip through, so will Bolton Berger. I like it better when ball dominates bat. Oh, I also love it when the ball dominates bats. And I hope we see a lot of good swinging pace today. What you see about Mayank Yadav? Absolutely nothing. He's too young. एक मैच में उन्होंने कुछ किया, वो बहुत पीछे हैं वो यार. उनसे आगे तो यश ठाकुर हैं, मोहसिन खान है, बहुत पीछे है वो लड़का भी. England are dropping Malan, whose strike rate. Why are we talking about David Malan on a day? We're talking about Rishabh Pant. Ravi Shankar, sometimes you go off topic. Keeper for T20 World Cup, MS Dhoni or Dinesh Karthik? Naman Oja. Power play bashing is more important than ever because bowlers have gotten better at Yorkers. Bilkul, the better need to attack through and through to maximize things. Saving wickets is no. Bilkul, Shaurya, I'm so glad you understood this. I wish our superstars understood this too. But क्या बोले, वो तो एवरेज के लिए खेलते. The way Hardik is playing, hope he won't select again. Hardik Pandya done. Hello Jamie, how you like Prithvi Shaw? I've already discussed Prithvi Shaw. You can go back. I've given you two chunks on that. CSK वाले शार्दुल को क्यों नहीं खिला रहे हैं? उसने अभी रणजी में बहुत अच्छा किया था. Probably उन्होंने नेट्स में कुछ प्रभावित नहीं किया होगा धोनी और फ्लेमिंग को. In T20, role clear is important. How can you bring it? How can you accept it if you being captain for 2 years? Exactly. The day that I heard that Kohli and Rohit Sharma were coming back to the T20 World Cup, I said, ले गई, डूब गई, नैया डूब गई. इनसे नहीं हो पाएगा, माफी चाहूंगा. What expectations you were having from Ravi Bishnoi this season? I singled him out as one of my bowlers to watch, but unfortunately, he's not done anything good so far. And I think he's going to bowl himself out of India's T20 World Cup plans. There's a spinners slot available. There's a fourth pacer slot available, and there's an all-rounder slot available. I love Ravi Bishnoi, but so far he's not done anything of note in 3 matches. I think he's bowled himself out of the T20 World Cup criteria. अभिषेक शर्मा कैसे हैं फ्यूचर के लिए? बहुत अच्छे हैं. मैंने
पिछली बार भी जब हमने बात किया एसआरएच को लेकर, मैंने कहा था कि बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है. This IPL is showing the importance of a good power play on many teams and making a deciding factor. Yes, I think it's not just this one. There are many teams who've shown in past years that the T20 is the most important aspect. Unfortunately, when it comes to the Indian team, the last two T20 tournaments this team played, एशिया कप 2022 एक T20 फॉर्मेट में खेला गया क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रही थी. वहां पे हमारे ओपनर्स ने रायता फैला दिया. हमारी टीम इतनी बुरी थी कि एक 5 टीम की टूर्नामेंट में हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए. उस समय जो जो डाउट्स थे मेरे मन में उस टीम को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर हो गए और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हारकर वहां से बाहर निकली. 2022 में 18 महीने पहले हमारे ओपनर्स केएल राहुल, रोहित शर्मा were the worst in the power play. और आजकल लोग को लगता है कि इनसे T20 वर्ल्ड कप हम जीतेंगे. नहीं होगा भाई. सुनील नारायण और फिल सॉल्ट ने दिखाया कि 6 ओवर के अंदर आप 90 रन बना सकते हो. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने दिखाया कि 6 ओवर के अंदर आप 100 रन बना सकते हो. जब तक बाकी टीम्स ऐसे नहीं खेलेंगे, T20 टाइटल्स किसी के पास नहीं आएगा. और मुश्किल बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका के विकेट्स अनटेस्टेड विकेट्स हैं और कैरेबियन वेस्ट इंडियन विकेट्स वो बहुत ही स्लो एंड लो विकेट्स होंगे जहां पे हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स फंसने वाले हैं. So anyways, we'll do a lot of shows about the T20 World Cup, but yes, the importance of the power play is lost on too many of our Indian players, which is why we don't win trophies. रोको को T20 में रोको, बिल्कुल सही है. Do you think Hardik will ever be accepted as India's captain? He was for the longest time when Rohit was not playing the format, but right now he's going through a tough phase. Who would I make the T20 captain? If Shreyas Iyer was in form, if Shreyas Iyer was in the good books of the selectors, I would say Shreyas Iyer for T20s. Was talking about SRH batting order because they lost yesterday in the day match. They lost. But again, that match was so boring that for me, the talking point yesterday was Delhi Capitals, upsetting CSK. IPL वाले हीरो कैम में कैप्टन को क्यों नहीं दिखाते हैं? पता नहीं. It's a good question. Would you like a new, raw, inexperienced kind of team like 2020 World Cup, or would you choose safe return? Oh, Harsh Tiwari, I've been ranting, I've been screaming on this channel since the 2022 debacle that you have to pick inexperienced players. Probably you haven't watched these shows, but for a good 18 months, whenever such topics have come up, and I've done the dedicated shows on this, I've said, don't take Rohit, don't take Kohli, don't take KL Rahul. Because if these guys do come back, you're reducing your chances of winnings. You might get player of the tournament, you might get some 50s, but overall, these players have not been able to deliver glory for 15 years. They're not going to do it now. Use the same T20 approach that Dilip Vengsarkar's selection panel used back in 2007. Send a few senior players, send experienced players. You need experienced players, but you need the right mix of youngsters. Now, if you're picking Hardik Pandya on bad form, just on reputation, if you're going to KL Rahul, if you're going to Kohli and you're going to Rohit Sharma, that means Rinku Singh is, like I've said many times, Rinku Singh is wearing a yellow bib and running drinks during the T20 World Cup. This is a guy who in his brief India career is striking at nearly 170. You need Rinku Singh, you need Jitesh Sharma, you need Jaiswal, and you need one more youngster. I don't know who that number 4 will be for India because Tilak Verma is probably not in the best of nick right now. You need 3-4 such youngsters to just go and play fearless cricket without the baggage of expectations. So yeah, I agree. You need that 2007 approach. We don't want safe return fixed deposit क्योंकि ये हम देख रहे हैं 18 साल से कहाँ जीते कोई ट्रॉफी नहीं ना. Patrana looks too different play when he play for CSK and SL. There's something with the Dhoni factor. बिल्कुल. और धोनी ने कहा भी कि प्लीज इस बंदे को टेस्ट क्रिकेट मत खिलाना. Indian players play ODIs like T20. Correct. We play T20 with ODI approach. It can only work if you have 4 world T20 bowlers who can be defensive as well as attacking. Yeah, I don't know if England actually had 4 T20 world-class bowlers, but they definitely had a lot better approach and talent than we did in the 22 World Cup. Who should get chance in T20? Khalil Ahmed or Arshdeep or Mayank Yadav? Arshdeep will go because he's got experience. मयंक यादव एक मैच में वी कैन नॉट से कि उसको जाना चाहिए. इनसे पहले बहुत प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी. If Mayank Yadav bowls 155 for the next 2 months, then he could come into India's discussions post
the T20 World Cup. But right now, he's after one match. There's no way he's going to the World Cup. Between the three, I will still back Arshdeep despite his no ball issues. Why India don't have mystery spinners like Rashid and Narayan? We need spinners. We have ना वरुण चक्रवर्ती बहुत बहुत मिस्ट्री है बहुत मिस्ट्री है उसमें इतना मिस्ट्री है कि उनको एक वर्ल्ड कप पे लेके गए थे सेलेक्टर्स क्या सूर्या वर्ल्ड कप से पहले फिट होगा 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 जी भाई राहुल सही में जा रहा है क्या आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड रिंकू को कीपिंग से नहीं 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 current stats. Oh boy, here we go. This is going to be fun. Good. Virat Kohli runs 181, average 90.5, Behtareen strike rate 141. And Rohit Sharma runs 69, average 34, strike rate 168. Runs or strike rate any day. Let me put it on record once again for anyone who doubts. In T20 cricket, the only stat that matters, or the stat that matters more than anything else, is strike rate. If you have an opener who's getting you runs at a strike rate of 168, bhale hi wo 25 run ho, that is much better than a 70 not out at a strike rate of 141 in the T20 World Cup context. लिख के लो मेरे से. श्रेयांश कह रहे 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को सीरियसली नहीं लिया था, तो इस बार भी हमें नहीं करना चाहिए. नहीं, देखो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं. बीसीसीआई वो आखिरी बोर्ड था जिसने T20 क्रिकेट को अपनाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में एक मौका दिया था. बीसीसीआई को लग रहा था, और ये फैक्ट है, बीसीसीआई को लग रहा था कि यार ये क्या ड्रामा है, चलो एक ऐसी टीम को हम भेज दें. बट there was still a clear thought process in their selection. They still kept some big name, but yes, they sent Rohit Sharma and RP Singhs and Piyush Chawlas and Yusuf Pathan. They sent these kind of players. Yusuf Pathan ने अपना इंडिया डेब्यू वहां पे किया था, रोहित शर्मा ने अपना इंडिया डेब्यू वहां पे किया था. But they still had a Sehwag, they still had a Gambhir, they had an Ajit Agarkar. There was a certain level of experience in that team. The problem is that overall the Janta and the board never thought in their wildest dreams कि ये टीम जाकर वो ट्रॉफी जीत लेगी. अब धोनी का जादू चल गया, धोनी का दिमाग चल गया, उत्तपा, आरपी सिंह, ये सारे प्लेयर्स चल गए. गंभीर, इरफान पठान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया. फाइनल में श्रीसंत वहां पे थे. जोगिंदर शर्मा को भेजा गया था. मतलब क्या कहूं मैं उससे आगे, लेकिन जोगिंदर शर्मा ने उस पूरे वर्ल्ड कप का सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया. इंडिया जीत गई. रातों रात लैंडस्केप बदल गया. 2 महीने बाद आईपीएल आया. इसीलिए श्रेयांश अब हम उस अप्रोच से, उस लेंस से, उस नजरिए से हम कभी भी T20 वर्ल्ड कप को नहीं देख पाएंगे, बिकॉज दैट वाज द अनथिंकेबल हैपन राइट नाउ. सो और अब जो प्रेशर है, इंडिया जीतेगी, हमारे पास बेस्ट टैलेंट है, हमारे पास बेस्ट डेप्थ है, हमारे पास आईपीएल है, इसको लेकर हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते एक T20 वर्ल्ड कप. मैं चाहता हूं कि उसी अंदाज से जाओ यार लड़कों, खेल के आओ, देख लेंगे, ऐसा हो, लेकिन होगा नहीं भाई. द प्लेयर्स आर नाउ बिगर देन द गेम. जितेश का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, क्या लगता है कि वर्ल्ड कप जाएगा? वो जाएगा बिकॉज he's already been there. You're not going to pick 2 players who've not played for India. जितेश जाएगा वर्ल्ड कप. He's my number 1 keeper still. Will we ever get to see Karthik Tyagi? I don't know. Gujarat still proceeding with Umesh Yadav is not done. Also, Delhi should use Jake Fraser. They should. I've heard he is good, but my gut feeling is he's one of those classic BBL products that won't really work on Indian tracks. Jimmy, I have a feeling Rishabh will be picked for T20 World Cup. Bilkul, I said this. I don't think he will go, but I definitely see the selectors considering him. Jay Shah ने बोल दिया, वो बंदा run मारेगा तो जाएगा. So I would not be surprised at all, but I still think it's too early for him to go. Till now, do you see Gill going to the World Cup squad? Yes, he's still in the discussions, but if he goes, he's not going to play a single match because Rohit and Jaiswal are the openers. How do you rate his captaincy till now? Small sample size. In that win against Mumbai Indians, Shubman Gill gets no credit because Mumbai collapsed. They lost like 6 wickets in 4 overs. That had nothing to do with Shubman Gill. And uske baad, I did see some good body language. I saw a rather relaxed figure. And against SRH, the bowling changes that impressed me. और इस IPL से पहले बंदे ने केवल 2 बार पंजाब को T20 लेवल में कैप्टन किया था. तो early days, but he looks pretty good. Yes. Sometimes I feel Surya is not able to handle high pressure situation. He's only good while batting first.
No, I don't agree. We've seen Suryakumar Yadav do some pretty good things. Will selectors drop Pandya if he fails to perform? You've already asked the question, and I said no. JY some media no still those are अच्छा 277 वाले chase में रोहित को बोल रहे थे कि you should have gone for 100. Not a fan of Rohit, but sometimes critics I don't have time for critics यार कोई बात नहीं. You might think I'm also one, and fair enough, but छोड़ो यार mainstream media बर्बाद है यार बर्बाद. देखते क्यों तुम लोग channels? Kumar Kanish is saying BCCI. Okay, in what context? Jay, both Rudraj and Gill batting seems better to captaincy. Gill used to clear boundaries last year. Possible, but I don't think he's getting those typical Pata Ahmedabad wickets. Yesterday's Vizag wickets was ideal of Aussie players. Maybe Jake Fraser McGurk could have been X factor. He could have, yes. Just like Rudraj captaincy is more about the owners making important decisions, Gill captaincy is more to do with Neraji and dugout. Yeah, you definitely see the Ashish Nehra imprint on that team. So एनीवे दोस्तों आज है करारा मुकाबला जबरदस्त मैच मुंबई बनाम राजस्थान वानखेड़े में क्या होगा देखेंगे कल मैं आपसे जुड़ूंगा रिव्यू करेंगे आज का करारा बहुत सारे सवाल आए आज के मैच को लेकर कोई बोल रहा है पेस चलेगा सीम चलेगा कोई बोल रहा है जॉस बटर चलेगा कोई बोल रहा है हार्दिक पांड्या पे दबाव बहुत होगा सारी बातें सही है बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस लाइव स्ट्रीम कल मिलेंगे आपसे डिस्कस करेंगे आज का मैच इफ यू वांट अ प्रेडिक्शन आई एम सेइंग RR for the win. Thank you. Love you all. Have a great Monday. Jai Hind.